Namaste and very warm welcome to Ansarkari. And in this episode, we are again going to pick up very crucial and important economics optional paper two questions, but they are having a kind of insights for every candidate, whether he is having or she is having economics option or not. And the goal again has been to again see the clarity and also putting ourselves on the better line to believe in an examination like environment and to put ourselves through it again and again rigorously so that we can identify certain key points which we can bring on the day of examination. So it's an ongoing process which requires a lot of consistency, a lot of hard work and integrity after a certain level. First question says, do you think that the pursuit of wage goods model could have been more appropriate for post-independent strategy of development? Give reasons. So the idea is that we haven't used wage goods model the way it should have been after post independence, and development hampered, or you can say it got stunted in some ways. So the wage goods model as proposed by CN Vakil and Ramananda postulates that the growth of employment generation is based on wage goods, basic goods like food, clothes, housing. Very true. So more appropriate because more broad-based than Mahalanobis model of heavy industries development. That means small industries, consumer industries, daily life, daily goods, daily needs. Given up thrust to small-scale industries in post-independence to achieve economics of scale and increasing export potential, increasing the share of industries in GDP, which India leapfrogged, possibility of not being stuck in the Hindu rate growth of 3% GDP, because once you are having a very, very small micro industries, though there is also a question about whether they would have been skilled or not. The question is that if there are a large number of enterprises, if it is having a little free market approach, then probably more economic growth is visible, that is for sure. The model believed capital accumulation will not directly generate uh, employment. It is sustained and it's an ongoing process. And that is why a parallel model in India, along with Mahalanobis, could have led to multiplier effect with industry's competitiveness and India developing mercantile trade surplus, which was missed during formative years. Very true, it is not just the case with mercantile, but any kind of labor intensive industry, we would say. At the same time, wage goods model required infrastructure that was not present in independence, or also limited finances was on a channel for government, and thus it chose to prioritize heavy industries. So I would say very clearly and in a very simple way, you have been able to explain what is actually asked in the question. So the only thing I would say is there by 1917, 1970s, 1980s, uh, we obviously we have to bring it somewhere that the wage goods, actually the wage goods came into picture if we say them about the daily consumer goods and even white electronic goods, or even white goods and so forth, they all are coming into picture greatly only after liberalization. जी सर So that boom will be coming up later. So I think answer is fairly addressed. The only thing is that whatever was there, whether it is radio, whether it is unorganized, I should say, and informal economy, you must ask your mom. They will be able to tell. Parents will be able to tell that initially there was अभी भी है बाजार में, हमारे हमें जो है वो बिना ब्रांड का साबुन, खुला साबुन मिलता था कपड़े धोने वाला। जी अब कहाँ गायब हो गया, है ही नहीं ऐसा कुछ भी। आप जाओगे बाजार में तो मिलेगा, वही पुरानी दुकान। जी And you have to go for the tier 2, tier 3, and even so, rural areas and expanded. Otherwise, everything is branded. हम्म, Things have changed, and obviously it is having a great impact. So question is well addressed. Broad areas are coming up, only one or two fact data we can say. So because in those times also there also would have been debate, there would have been also people like when Brahmananda sir was actually postulating this, then also debate would have been there by different political parties and economists, and also maybe by planning commission at that time. So what they were saying, हाँ जी what सर we can write by one or two line on that, that is going to give us a kind of an edge. Explain the major factors that affected the growth rate of economy in post independence India till 1991. Again, we got an opportunity to write this question because so much we have written in a way, it's a whole course we have covered. So I think this answer is a kind of a test for us. The average growth rate of Indian economy was 1.7% in the last decade of 1940s before independence, and NSO estimates that remained stagnant here for a long time. The main factors that affected the growth included availability of finance, availability or unavailability, availability of finance and credit,
तो What you are saying? फैक्टर पूछा उसने तो इसलिए Okay. stability, हाँ सही बात. Availability of finance and credit. The government was the largest financier through nationalized banks by SBI, government bonds, yet remain inefficient. I agree. Good. Uh, I think good conjecture, a kind of an when you said yet remain inefficient. So it's a small sentence, but a very impactful. जी Infrastructure creation through capital accumulation via temples of democracy like dams and hydro projects. For example, Damodar project accelerated electricity supply and provided irrigation facilities. Agriculture growth fluctuated due to 90% acreage land rain-fed, consecutive droughts, low labor productivity yield, and due to conventional practices in technology. I think very well written. It's fine. Industries contributed to 40% to GDP during 1947 to 70. The contributed gradually declined. License Raj, Inspector Raj, monopolies and District Laws Policy Act hindered competition. Import substitution policy focused on making domestic players competitive. So the growth was not uniform till 1991 and fluctuated in the band of 1% to 3% only, leading to Hindu rate trap. I think when we see, then it is definitely a far more clear answer in a good flow, and lot of areas are also covered. I think 85 to 90% all areas are covered, all major areas are covered when we are saying that what were the major factors. So when you are ready with the confidence to bring all these into picture, then the next step would be to squeeze them a little bit, and then bringing, say for example, one factor was unbalanced regional development which is there because of geographical reasons. Our pockets are such, because there is no infrastructure we are writing. But why infrastructure is so difficult? Because it is not accessible, it is inaccessible. जी Whether you talk about deep northeast, whether you talk about Jammu Kashmir, whether you talk about the deep down south, so there are pockets of prosperity, regions of development. वो भी एक कारण है कि पूरा भारत आज की डेट में हमने जो है कटरा से वैली तक की हमने रेलवे लाइन की बात की, हमने deep interiors into northeast we have taken up the railways till the borders. And similarly in Uttarakhand also, Char Dham, or whether you speak about Uttar Pradesh, one of the greatest engines, when we are speaking about Bundelkhand corridor or Yamuna expressway or Gorakhpur to Lucknow or Delhi to Dehradun or Delhi Meerut RRTS. So this is one example. So that is why you have to, when this is all correct, just squeeze it a bit, and then one factor we can always add some small factor into it. So it's an ongoing process, but then I think well written. During the British rule, India was rooted with seeds of modernization, but the country remained underdeveloped. Very true. So India's growth rate remained suppressed due to oppressive and exploitative British Raj, with several cascading effects like drain of theory explains, propounded by Dada Banerjee. Very true. Seeds of modernization: railway, press, modern education, commercial agriculture, telegraph, symbolic modernity. Definitely, all these points are wonderful, and they are obviously seeds are for modern. But these seeds couldn't germinate in a healthy plant of accelerated growth and development due to colonialism, science of underdevelopment, deindustrialization, collapse, and the flourishing cottage industries of India, dumping factory, British made goods in India hindered competitive development, basic goods industry like textiles in Bombay. New land revenue system trapped the farmers into high readiness burden. Divide and rule policy of British paramountcy led to emergence of communalism होना चाहिए, communism नहीं. As a result, India became poverty capital of the world, YKLG, with dependence on food imports, and later of the 20th century, India jumped back as economic powerhouse only after LPG reforms of 1991. I think well addressed, and again, I always because when we see different options, so here it is economics optional. So I think only thing is that अगर ये बोल सकें, for example, when you are speaking about new land revenue model, or even when you're speaking about textiles, so we can just say like uh, like Bombay and Ahmedabad, they became hub of textile. Or one example you can say, one first means cotton textile mills also you can say, but still uh, we were not able to fulfill our needs, and we were dependent upon the export because it was a kind of a discriminatory tariff policy. So जी modernity is there. For example, railway is there, but the imperial nature of railway, that guaranteed investment, because we have to bring the economic angle into every point. So guaranteed investment is actually ruining us, or discriminatory tariff is ruining us, or the pattern of development is also ruining us, or
education is there, but then where is the technical education, where is really growth oriented education? तो थोड़ा सा इकोनॉमिक का जो एक peppering we would say, and our answer is wonderful. So small and light points are coming up. That is a good point. How does population growth affect economic development of a country? Again, a very, very thoughtful and sincere question. Can the age structure of population alter the pattern of development in the country? Examine in the light of Indian experience. Very practical question. So the population of a country, demography is one of the most important pillars of growth, and it provides factor services in the form of labor force to run the engine of growth. Okay, one point is very correct. It is definitely it's a labor force. And effects of economic development 1947 to 65, slow growth of population, high birth and death rates led to very less net increase, heavy dependence on agriculture income with average GDP growth of 1.7%, high population of dependents led to demand for subsidy support. From 1965 to 1990, population explosion, size of internal reforms grew to 90%, disguised employment in agriculture expanded with zero marginal productivity. I like the word you are bringing it. The industries and agriculture, that is primary and secondary sector, majorly led to growth. 1990 to present, a peak deceleration, that is skilled youth, services export surplus became the US of Indian good, demographic dividend advantage contributed to startup revolution, making India one of the biggest spot. I think very positive point. Fell in TFR below replacement rate into 2024. Social security expenditure grew to 5% of GDP, and geriatric care economy gaining attention. Therefore, because of age structure, India leapfrogged from एग्रीकल्चर टू सर्विसेज सेक्टर. ये आपने बहुत अच्छा बोला, लेकिन जब वो कह रहा था ऊपर कि डिस्कस इन द लाइट ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस, तो आप बिल्कुल सही बोला, लेकिन वो इंडियन एक्सपीरियंस जब वर्ड बोलता है तो हम ऐसा हमें लिखना पड़ेगा कि वाकई जैसे अब मान लीजिए सर्विस सेक्टर ही है, सो टैलेंट पूल, द ग्रेट टैलेंट पूल विच वाज अवेलेबल, जी टेक्निकल टैलेंट पूल, तो आप वो बोल सकते हो इट वाज यूथ था, पूरा यूथ है, इसकी वजह से हमें मौका मिला. और एग्रीकल्चर में भी बिकॉज वी आर so much in number, we are having a huge labor, we are having a huge labor force, so that is why disguised employment में जाना पड़ा. तो अगर हम इस आंसर में और कुछ नहीं करते, अगर एक ग्राफ होता या कुछ अगर हम बोल रहे हैं, तो आई थिंक और भी मतलब बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना और काफी सारे पॉइंट्स तो आ ही गए हैं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी एंड ट्राइंग टू थिंक ऑन द स्पॉट कि कैसे मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा यूनिक और बनाऊं. बाकी आई थिंक सारा इसमें आया है कि कैसे चीजें हुई. सो आई थिंक डेफिनेटली वी आर ब्रिंगिंग लॉट ऑफ आइडियाज, बट देन वो जैसे बोल रहा है इंडियन एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस का मतलब वही है कि भाई जैसे अब 1917 1970s और 80s तक अगर केरला के पास पॉपुलेशन नहीं होती तो मिडिल ईस्ट माइग्रेट ही नहीं होती. जी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ ना, वहां से माइग्रेट हो गए, वो चले गए इतने सारे लोग. केरला में जगह ही कम पड़ रही है, जमीन कम पड़ रही है, लिटरेट इतने सारे हैं. झारखंड और बिहार से आपके लेबर माइग्रेट नहीं होता इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पॉपुलेशन ग्रोथ ने अफेक्ट तो किया. जी गोवा, गोवा जो है अर्बन, कंप्लीटली अर्बन स्टेट, वो डेवलप कर गया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया, पर कैपिटा जीडीपी, यूटी का एग्जांपल है, जैसे चंडीगढ़ है, उसका पर कैपिटा इनकम भी हाईएस्ट हो गई, तो वो चीज लेके आ जाइए हल्का सा. और आप ये भी लिख सकते हैं कि बिकॉज जैसे आपने बता ही दिया गैरेटिक केयर का, तो लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि इंडिया का जो जिसे हम एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लेके आ सकते थे, हल्का सा कॉन्सेप्ट, तो आपको पता ही है कि जो बर्डन वाला पार्ट है, चिल्ड्रन और एल्डरली, केयर इकोनॉमी जो है, केयर इकोनॉमी. सो केयर इकोनॉमी जो पॉपुलेशन ग्रोथ का एलिमेंट है, केयर इकोनॉमी वाला, वो तो खींचेगा ना आपको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तो रोकता है. हाँ जी इंडिया में लड़ाई शुरू से होती रही ना, हम तो शुरू से बोलते हैं यार लोग बहुत हैं, लोग बहुत हैं, हाँ जी इतना बड़ा सिस्टम चलाना है भाई, क्या करें. तो एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन वो अल्टर करता है पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट का. तो आप उसको बोलो कि हम अभी पीक स्टेज पे जा रहे हैं, जी बिकॉज हमारे पास यूथ, हमारे पास स्किल्ड वर्कर, हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है. सेम इज नॉट द केस विद जापान. तो इंडियन एक्सपीरियंस यही है कि सेल्फ कंजम्पशन है, इतना बड़ा डोमेस्टिक हमारा जो इकोनॉमी है, जब हम बार बार एक्सटर्नल शॉक को बोलते हैं कि एक्सटर्नल शॉक जितना भी आता रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता. हम खुद ही इतना कंज्यूम कर लेते हैं. हाँ जी हर सिस्टम में हमारे पास बड़ा है, जो भी है बड़ा है. हम्म समोसे ही इतने बन के बिक रहे हैं डेली की, आप सोच नहीं सकते. हाँ जी हाँ कंजम्पशन इतनी है, चीजें इतनी, तो वो वाला एलिमेंट आते ही आंसर हम्म कंप्लीट हो जाता है. बिकॉज आई थिंक इतना सा तो इकोनॉमिक्स है, तो इतना सा तो हाँ सिंपल सिंपल हमें डालना ही पड़ेगा, वरना जीएस वाला व्यक्ति भी इसको लिख सकता है.
तो दोनों एंगल है, लेकिन इकोनॉमिक्स वाला ऑप्शन वाला बस कुछ की वर्ड, जैसे आपने वर्ड लेके आए आप, और आपने की फ्रेजेस को डालने की कोशिश की जो पहले से ज्यादा आ रहे हैं, बस दो तीन और बढ़ जाएंगे तो आई थिंक पूरा आंसर उसी स्ट्रक्चर में आ जाएगा। जी। हाँ जी सर। So now we have started bringing everything. It is now the time for bringing the exact phrase, then writing little less, giving हम्म। some data. बस अगर इतना बड़ा नहीं होता, ए स्ट्रक्चर की बात मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ जी। तो आपको राशन इतना नहीं देना पड़ता, हाँ जी। हाँ जी। सब्सिडी नहीं देनी पड़ती इतनी। हाँ। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो इंट्रिकेटली लिंक्ड है। जी। लेकिन भारत के डेवलपमेंट में क्या है, भारत एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कंट्री है, इसीलिए जनता ने जो चाहा सरकार को देना पड़ा, आज की डेट में भी दे रही है ना। हम्म। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री धन्य लक्ष्मी लाना, लड़की बहन योजना, क्या है ये, एज स्ट्रक्चर की वजह से तो है। इतना एज, उतना फीमेल ही नहीं होगा, यूथ पार्टी नहीं है या ओल्ड है जो भी है, हम्म। तो वो एक बार बता दिया हमें, अगर याद है कि भाई 35% हाँ इतना है और ये इतना है, वो लिख दिया और उसके बाद उसको आगे चलाने वाली बात कर दी, बस बात खत्म। जी। कंक्लूड प्लीज। सो कि एग्जैक्ट और क्रिस्प आइडिया आना चाहिए विद द की फ्रेज, और थोड़ा सा एग्जाम्पल्स भी अगर आ जाए, और जो जनरल आइडिया है वो तो आना ही चाहिए इन लेस वर्ड, उसके अलावा जो कॉमन सेंस वाला है, उससे आंसर और डिफरेंट हो सकता है, तो एक दो पॉइंट्स उसके भी। बिल्कुल, क्योंकि हम सारा देखो पढ़ के नहीं कर सकते, सब कुछ पढ़ के नहीं हो सकता, लेकिन रिग्रेस प्रैक्टिस से होता क्या है, आइडियाज जनरेट। हाँ जी। हम्म। भाई बोल रहा है वो कि एज, इकोनॉमिक जो एज स्ट्रक्चर का पॉपुलेशन क्या है, क्या उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, एज स्ट्रक्चर वर्ड यूज हाँ किया। स्ट्रक्चर है। तो यानी कि अगर मान लो यूथ है, एक 15 to 60 एज ग्रुप है, हम्म। और स्किल नहीं है, तो हाँ। बर्डन बनेगा, हाँ जी सर। लॉ एंड ऑर्डर भी खराब होगा, हम्म। क्राइम होगा तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, जी। हर चीज के लिए पैसा चाहिए ना। हम्म। और अगर वही, अगर मान लो काम कर रहा है बहुत पॉजिटिव, पेड़ लगा रहा है सपोज करो, हम्म। तो जी। आपका कुल मिला के लास्ट में तो कई हजार करोड़ बच रहा है। हम्म। वही अगर यूथ यूएस जा रहा है, जी। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो हम्म। आपका फिर से इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ रही है। वो यूथ स्टार्टअप कर रहा है, हाँ जी। वो यूथ compete कर रहा है यहीं पे, हम्म। है। वुमेन का मैरिज एज बढ़ रही है, जी। मैरिज एज बढ़ रही है तो इकोनॉमिक आपका कॉस्ट कम आ रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका ज्यादा हो रहा है। हम्म। क्यों हो रहा है, फैमिली प्लानिंग राइट टाइम पे हो रही है, घर बस रहे हैं, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है, कल्चरल वैल्यूज आगे परस्यू हो रही है, खर्चा कम हो गया। हाँ जी। अब बात हो रही है भाई कि सारे लिव इन रिलेशनशिप उछल रहे हैं, हम्म। तो उससे क्या हुआ, उससे कल्चर खत्म, उससे ट्रेडिशनल वैल्यूज खत्म, जी। आप समझे। हम्म। और हाई एंड वेस्टर्न कल्चर जब पेनिट्रेट कर जाएगा तो वो जी। सस्टेनेबल नहीं है, हम्म। तो वो खत्म, तो मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, जी। बस थोड़ा सा इनोवेटिव और थोड़ा सा रिलैक्स होके उसको लेके आना है। तो आई थिंक, बिकॉज आई एम ए फर्म बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि अगर सब कुछ वही लिखना है जो रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है, जो मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट्स में है, या जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में एग्जैक्टली वही लिखना है, तो हम्म। आई थिंक देयर आर मेनी well qualified people are around, जी। MBAs and highly high profile NRIs, returned people, those who are trying for UPSC, they will get into service. But we have never seen such kind of people at top ranks. Someone from very humble, someone from very down to earth, very ordinary, but trying to bring something on their own feet. जी। They have a very, हम्म। that's what I believe, that's what we practice. But then I'm not saying, if you can recall, if you can quote, if you can write Routledge, if you can write, Indian Institute of Technology example, if you can write about Delhi School of Economics, if you can quote Madras School of Economics, if you quote Gokhale Institute, if you quote even Indian Institute of Population Studies, if you हम्म। quote National Council for Applied Economic Research, जी। if you even talk about Indira Gandhi Institute of Development and Research, no harm. जी। If you talk about Tata Institute of Social Sciences, मारो इनको सबको, लाओ पकड़ पकड़ के। हाँ तो जी। बात वो है कि लानी वही वाली बात है कि भारत वो देश है जिसमें अभी भी 5:30 बजे बोला जाता है कि लड़की घर चली जाए, फैकल्टी घर चली जाए, लेडी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और हम्म। उसके खिलाफ बैकलैश। हाँ जी।
अब इसका भी इकोनॉमिक्स से लेना देना है। हम्म आप ऐसा कभी माहौल नहीं बना पाए, आप सेफ्टी से स्ट्रीट लाइट नहीं लगा पाए, हम्म आप कभी वो इकोसिस्टम ही नहीं बना पाए जिससे भारत की हर महिला, भारत का हर छोटा बच्चा वो जी। खुश होकर कुछ भी कर सके। हम्म तो ये वाली बात है। हाँ जी साहब। Let's move and think in that direction and try to bring, and then we'll compare, because that's what is requirement. Thank you very much for being part of such creative, on the spot, innovative, and participative discussion, because this is what is the one of the most unique and eye opening understanding which we try to bring. Thank you very much, and get success with Ansarkari.